केला की प्लांटेशन है और ये प्लांट लगभग 3 साल का लगा था, तो इसकी एज अभी के हिसाब से तो लगभग 4 6 9 साल है। So please tell me the variety, the rootstock and the age. Rootstock is 106, variety is red cap dot, and the age of the plant is 9. Okay. And this site was in apples prior to these being planted? So I think that's a really important point here, that the trees haven't grown very well. It's been much bigger than this for 9 years. And this is a really good example of a replant problem. What would have been our choice over here in a replant? A vigorous one. So Geneva series? triple one, or Geneva Probably possibly. Geneva series? I would say That'd be best option. triple one. I think the Geneva series you have are all small trees in the M9 size, so I don't think they would grow well enough. I think you need to go up to triple one. And my memory of this site is that the irrigation was quite late to be established after the trees were planted. And so the combination of replant soil and lack of irrigation has stopped the tree from reaching its potential, and it never will. It will never be as big as it should be. Okay, sir. One more addition here, every third line is of random dala on M9. Okay. So let's look at those next. Okay, so yeah, this tree is, as David just said, not making much growth at all. And so in terms of pruning, I don't think it requires very much pruning. Let's look at it, well, we immediately look at these branches here, which are upright vegetative shoots that are very strong. So these are our problem, if you like, or our challenge. Instead of summer pruning was there. Yes, so they've all been headed in the summertime, I understand, and the response is, as you would expect, quite upright growth. But normally when we summer prune, we see it's a vegetative shoot, and we don't want it in that position, we would remove it completely, or cut it back to quite a short. Even in the summer, we can clean. Yes, we can. Yeah. That is older wood. We can clean cuts in current woods. Well, yes, I think Will we prefer in older woods clean cuts in summer? yes, I think that's an option, because if you can see that's very strong and not and going to continue to grow strongly, it's not going to be of any use. So we would rather, and I might as well remove it, and this is in the winter obviously, but leave a short stub, and we would think there's a reasonable chance of getting some flat regrowth from that. So इन्होंने यहाँ नॉच कट दिया, बोले स्ट्रेट ब्रांच तो ऊपर ही ग्रोथ लेगी जी, उसमें बीम नहीं बनेगा। इन्होंने थोड़ा नॉच कट दिया है कि यहाँ से स्लीपिंग आईसी की स्ट्रेट ब्रांच मिल जाए, इंस्टेड उसमें बीम बनेंगे और ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। और यहाँ हमें स्ट्रेट ब्रांच की ज़रूरत भी नहीं है, ये हाइड कर रही है यहाँ पे। इसको ओवर शेडो हो रहा है इसको। हाँ, और स्ट्रेट ब्रांच हमेशा वेजिटेटिव ग्रोथ। नरगेटा जी, एक क्वेश्चन और है मेरा ना, why all these water shoots have been grown so speedily and rapidly? That is why straight in spite of these main branches. हाँ जी सर। ये देखो ना, पता क्या है? हाँ, ये देखो ना कारण सर। क्या हो सकता है? या तो यही बता रहे हैं हमारे ये। कोई fertilizer problem है। Same question. हाँ। Either we have any sort of fertilizer fragmentation problem, or otherwise the variety problem. Tell us. yeah, Why these water shoots have grown so speedily? well, they have spite grown of so this. speedily because they've come from the base of a big cut here. So there's a lot of sap flow established here, and because they're regrowing from this cut, It's a and winter, again, winter cut. well, whenever it was done, there was established sap flow in this area, and then again, this was quite a large-sized branch that's been removed. Yeah. So that's really the reason why we're seeing strong growth from these two cuts. And
and then the heading back to short shoots has further created vigor in this situation. इतना हैवी कट देंगे ना जी आप पीछे, क्योंकि फिर उतनी जो स्लीपिंग आई है वहाँ से उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ऊपर से यहाँ तो सैप फ्लो भी बहुत नज़दीक है, इसलिए इसने सारा यहाँ से ये न्यूट्रिशन खींच रहा है। ऊपर से इसकी अपराइट ग्रोथ है। एक इसके लिए और एडवांटेज ये हो गया कि और कट दे दिया और स्ट्रेट ही और ये supplement to this question. One thing is we should think one thing more over this. कि फिर हमने ये कट क्यों दिया? इसमें मैं ऐड करूंगा। इसमें क्या हुआ, इसकी जो आप देख रहे हैं प्लांट की ग्रोथ नहीं थी, तो हमने क्या किया, जो सेकेंडरी ब्रांचेस मतलब जो लीडर से निकले हुए ब्रांच है उससे फर्दर निकले हुए ब्रांच हम ब्रांच ही बना रहे थे, उनको हमने क्या किया, शॉर्ट किया। क्योंकि जो प्लांट का जब इसमें क्रॉपिंग होती थी तो एक साइड ही बैलेंस बन जाता था, और क्योंकि सपोर्ट था नहीं प्लांट को, तो हमने उसका ताकि बैलेंस बने तो इसके ऊपर शॉर्ट करने की कोशिश की। जैसे ये कह रहे थे कि भाई जो भी कट किया गया, हार्ड कट किया गया, क्योंकि उस हमारे को उसको क्लोज लाना था, इसके ऊपर बैलेंस रखना था, हमने इसलिए क्लोज किया। और जो ये एक मैं पॉइंट रखूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि ये समर प्रून, जैसे हमारे पास नए शूट्स आते हैं तो ये कह रहे हैं कि इसको नज़दीक से ही काट देना चाहिए था, हमने ये ऊपर काटे, क्योंकि समर प्रूनिंग थोड़ी हम ऊपर काटते थे, पर हमने ये एक्सपीरियंस किया कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, तो हमारे को ये समर प्रून काट देना चाहिए था। तो अगले साल से हम ये एडिशन रखेंगे, क्लीन कट देना, आपने इसको रखना ही नहीं है। तो ये हम एडिशन, इसलिए समर में जब छोटी ग्रोथ होगी उसी टाइम रिमूव हो सकता है, जहाँ तक के पूरा न्यूट्रिशन प्लांट का खा लिया होगा। जहाँ तक अंग्रेजी का क्वेश्चन था कि भाई ये हार्ड कट क्यों किया गया, क्योंकि ये साथ साथ में फेदर एक जगह से अगर आप निकाल देंगे, आप भी जब ओवरलैप प्लांट हो जाते हैं ना, फिर एक ही पॉइंट से अगर आप बहुत सारे फेदर लेंगे तो क्या हो जाता है, ये समझ लीजिए पाइपलाइन है, जिससे एक ही जगह से आपने बहुत सारी मल्टीपल पाइपलाइंस ले ली, क्योंकि सैप फ्लो तो वैसा ही जाएगा। अगर एक ही जगह से पूरा सैप फ्लो इधर, न्यूट्रिएंट का फ्लो इधर उधर चला जाएगा तो ग्रोथ को मिलेगा नहीं प्लांट को, तभी सेंट्रल वीक रह जाता है। Okay, so overall we don't really have enough growth here and enough fruiting capacity. So we want to increase the potential of the tree to carry fruit. If we look at this branch, it has quite a flat angle, and it has been headed a couple of times, unnecessarily we would say. But we do see that it has, because of its flatter angle, it has developed some good spurs. This is obviously what we want. In fact, there's probably, to my eye, there's too many spurs there. Spurs, yeah. So we could just remove some of the underneath ones. Good. Because they have the shaded fruit. That's not so good. So we want more of these. Branches like this has again, well, that's had a tough life, hasn't it? Maybe it's been tied down quite late. The character of this branch is very different from Yes, and maybe, but so look, coming back to these, if we, and this is not the proper way to tie down, but just to illustrate, if we can get some angle onto this, we can produce this. थोड़ा सा अगर स्पर को फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा झुकाना हाँ हेलो हाँ स्पर फॉर्मेशन तो ये है। इंस्टेड के यहाँ कट देने के बजाय इसको यहाँ खाली जगह में हमने कर दी होती तो हमें इससे भी पतली ब्रांच, ये है डिजायरेबल, वैसे डिजायरेबल स्पर में ये ब्रांच डिजायरेबल है, ये भी नहीं है, ये तो रिमूवल कंडीशन में आ गई, अब तो रिप्लेसेबल। साल में 2 ब्रांचेज हर बार हर ट्री में रिप्लेस करनी चाहिए। ये आपके जो ये हाई डेंसिटी के प्लांट है, 2 जो स्टिफ फंड ब्रांचेज है, मोटी ब्रांचेज है, 2 रिप्लेस करनी है आपने हर साल एक प्लांट, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। ठीक है, जो उससे भी अगर आप लोग 3 रिप्लेस करनी है, उसको हल्का आगे कट दे के अगली साल के लिए रिप्लेस करना है। ठीक है ना जी, उसको उड़ाई देना है। सेंटर के साथ कंपटीशन, अब ये तो नहीं कर सकते हम, ये तो बहुत ही हो गया, ये तो प्लांट ही डेड हो जाएगा। तो ये तो सीधी करके जितने नीचे आ जाए उतना हमारा फायदा है। बस हमारी डिजायरेबल यही थी कि 1 साल का ही शूट इधर को हमने कर दिया, ये देखो आप इसमें भी, और इसको रिन्यू करना भी बहुत आसान है ना जी। नया फेदर भी आएगा, वीक आएगा, कट भी लगेगा, कम लगेगा। कट को रिड्यूस करना है प्रूनिंग के दौरान, जितने भी आपके मिनिमम कट्स डिजायरेबल फेदर रखने हैं, जितने आपको चाहिए। 1 मीटर में 6 से 8, 9 और 12 फीट में आपके 36 से 38 फेदर। 1 मीटर में 8 से 9, 12 फीट का जब पौधा जाता है 3 में आपका 4 मीटर पे, तो उसमें 38 से 40 तक फेदर एक डिजायरेबल, और वो एक मुट्ठी के बराबर आ जाते हैं जी, इतने स्पेस में। स्पर्जन
हाँ जी, और हमारे को शेप जो बनानी है वो पिरामिडल शेप बनानी है। पौधा नीचे से ऐसा होना चाहिए और ऊपर से आपकी शेप ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से ऐसा हो, ऊपर छतरी बन गई और ऊपर से लाइट को आपको सारे प्लांट पे घेर दे, नीचे जो भी बीम होगे फ्रूट लगेगा, वीक लगेगा फ्रूट सेट ज़रूर होगा, वो कलर नहीं आएगा उसमें और छोटा रहेगा, वीक फ्रूट आएगा, तभी ऊपर आपने देखा होगा क्वालिटेटिव फ्रूट ऊपर लगता है। इसलिए अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में आपने टहने ऐसे बनाने कि हर टहने में चारों तरफ से धूप और हवा लगे, उससे ही हमारे को क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन होगा। So were you talking about the number of branches per meter? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. So yeah, we don't really have enough branches, or only just. So again, my first thought would be to remove that because it's right growing up the Yes. centre of the tree. Exactly. But actually, in the summertime, we could even tie that We down there. can bend it. We have क्योंकि यहाँ खाली space. स्पेस है हाँ, ना जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। ब्रांचेस की कमी है इस बिल्कुल ठीक ट्री है, में, बिल्कुल है ही ठीक नहीं है, हमारे पास, बिल्कुल। तो ये बेस्ट मेथड रहेगा। आया अगर तो हम है ही इसको- है। हाँ जी, आया तो है ही और है अभी इसको। ये नाजुक भी है, अभी मुड़ भी जाएगा, जाएगा। इतनी ब्रांच के बजाय इतना तो आसानी से हो जाएगा ना जी। ये भी जाएगा खाली कट स्पेस भी में, बच जाएगा। ये भी खाली स्पेस सीधा हो जाएगा, तो इसमें बीमें बन जाएंगे। हमारे को एक वीक ब्रांच इसको चाहिए, आपको इसको एक, नीचे बांधना है हमने। जी सर, इसको किसी भी तरह से आपने झुका देना है, बांध देना है, सीधा करना है एंगल। मोस्टली जो नीचे झुकाने का जो हमारा सीजन है वो अर्ली नहीं है, अर्ली आपने एकदम नहीं शुरू है, जुलाई अगस्त में करना है, नहीं तो अर्ली में करेंगे आप, विंटर में करेंगे, आजकल ही कर दिया, समर में एकदम आपके यहाँ से शूट निकलने सारे शुरू हो जाएंगे, आप थक जाएंगे शूट छांटते छांटते, ये सीधे निकलते टहने से। इसलिए अगस्त में जब हमारा ग्रोथ कर्व ऐसा जाता है ना, फिर स्टेट हो जाता है अगस्त में। शुरू में प्लांट एक्सेस ग्रोथ लेगा फर्स्ट 2 मंथ में, उसके बाद ना जो एक स्टेट ऐसी आ जाती है उसकी, फिर रुक जाती है, धीरे धीरे फिर नीचे आती है जब पत्ते गिरते हैं। उस स्टेज में हमने बेंडिंग करनी है जब ये ऊपर की ग्रोथ ना हो, जब स्ट्रेट हो जाए हमारा कर्व और नीचे की ग्रोथ हो, तब हमने बेंडिंग करनी है, तब आपकी अपराइट ग्रोथ रुक जाएगी। आजकल भी मतलब ठीक नहीं है बेंडिंग करना। नहीं, नॉट विंटर में तो हम बोलते नहीं है। July and August is the best. You can do it in the winter, but the problem with doing it in the winter is you'll get some upright growth here, which is not useful. But if you do come back and remove it, it's still okay. So can you hold that that branch? will- Just hold it for 6 months in this position. No, bad joke. So yeah, why were these cut? They looked like they were flat and fruitful. I would have expected that we had spurs here, but somebody cut them. Why? Because it was too vigorous, no, and balance was of the tree was like this. It was bending like that. So I cut off balance toward this because it's self-standing. No? Yes. Okay. Fruit toward this Was side it is was it less. growing like up like this? Yeah, it was leaning toward this. Has grown Yeah. already. Yeah, and that is More sure. than this, yeah, it's whole tree. almost as big as the It leader. was difficult to remove. And the Yeah. tree is also bending towards this side. yes, that's why. yes. Okay, Okay, I have a one question. sure. हम क्या बोल रहे हैं ना अभी तक की भी बेंडिंग कर दे, बेंडिंग मेरे ख्याल से I would like to ask one question. How much bending, because bending will depend on how much spacing every farmer give to in his orchard. If they are closely spaced, we will bend this, how much, what should be the angle, and how much branches, or we should allow branch to grow upright, and after 1 year should we bend if spacing is too much, Or the current very high, growth. or current season growth if spacing is almost 8 feet plant to plant, Yes. because lot of orchardists here, they have planted their orchard at spacing of 8 feet, 10 feet. It's Some- good yeah. spacing for triple And one. They want level to- triple one. Yeah. So then at what time they should start bending? After I 1 think year? you said already, right? Bending season is perfect, July, August. Yes. That is No, explained. I'm not talking about season. I'm talking about angle. And after 1 year, Okay. actually, some people let it grow for 1 year. After that, they bend it. Because if they bend it early, that won't occupy the space of 8 feet, no? It won't grow up to Sure. 4 feet. Gotcha. Okay, well, this is a very good angle, slightly below horizontal. We say on the clock, 4 o'clock, 8 o'clock. Slightly below horizontal, we think is optimum. You can be horizontal, is okay, or even slightly above, it's still okay. But we should aim for this. And sure, you're right, sir, that you can tie down
1-year-old shoots in the middle of the summer, but also 2 or even 3 to get that length that you talk about is a good approach as well. And in the summertime when there's sap flow, the wood is flexible, and if you give it a good stretch first and a twist so that it won't break, but these are good flat angles here that won't break, then you can easily train wood that is 2 or 3 years old. And even if it's very upright, maybe you can't get it this flat, but at least if you put in a spacer, at least you can get an angle like this. It's always going to help. तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारे को ऐसा नहीं करना है कि जैसा, क्योंकि हम क्या करते हैं यूट्यूब पे देखते हैं और सारे उसी, क्योंकि वो ट्रेनिंग बता रहा है 3x3 की, वो बेंडिंग उसी हिसाब से कर रहा है। अब हमने स्पेसिंग रखा हुआ है 8 फीट का, 10 फीट का, और हम भी वैसी ही बेंडिंग कर दे रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है कि आपने देखा होगा बहुत सालों के बाद ड्वार्फिंग ट्रीज बन जाते हैं और स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है और बीच में स्पेस रह जाता है खाली। आप तो यूनिवर्सली नहीं फॉलो करें वो ट्रेनिंग सिस्टम, आप देखिए कि आपकी स्पेसिंग कितनी है। वो ये भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास 111 है और स्पेसिंग ज़्यादा है तो उसका एक एंगल पे बेंड करे, पूरा बेंड ना कर दे। नहीं तो अगर छोटे से आप उसको बेंड करना शुरू कर देंगे तो वो वैसा ट्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो 4 फीट का 8 फीट आपने स्पेसिंग रखी है प्लांट टू प्लांट। अब 4 फीट उस प्लांट का फैदर इधर को आ गया, 4 फीट इस प्लांट का फैदर, 4 फीट तक भी तो ले जाना है ना प्लांट को, जब आपने स्पेसिंग उतनी दे रखी है। तो यूनिवर्सली नहीं फॉलो करे हाई डेंसिटी को। 3 फुट की स्पेस ट्रेनिंग अलग होगी और एक 8 फुट पे स्पेस प्लांट की ट्रेनिंग अलग होगी। इस बात पे मैं थोड़ा सा ऐड करना डिग्री पे करना पड़ेगा सर उसको? थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा इस बात पे। जैसे इन्होंने बताया भी है, 4 मोस्ट के बगीचा लगाने से पहले आपने सेलेक्ट करना है वैरायटी और रूट स्टॉक। इनका कहने का मतलब है प्लांट को हमने मिनिमम कट्स देने हैं। अब जब आपने वैरायटी और रूट स्टॉक सेलेक्ट कर ही दिया है तब जो है स्पेसिंग उसमें डिफाइंड है। आप ये कहते हैं कि M9 में हम 5 से 6 फीट मिनिमम देते हैं स्पेसिंग, हमारे यहाँ क्या है 3 फीट। वो है यूरोपियन स्टाइल, क्योंकि वहाँ धूप कम है, ठंड है, ठंड में ग्रोथ कम होती है, धूप कम होगी तब भी ग्रोथ कम होती है। हिमाचल में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में वहाँ हमारे को धूप बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये कह रहे हैं कि कट्स कम देने हैं। जब हम नया पौधा लगाते